Assalamu alaikum students, I am Usman from Conceptual Chemistry Zone, and today we will study the peculiar behavior of boron. But before that, if you are visiting my channel for the first time or watching my video for the first time, I will request you to please subscribe my channel. The first part of this video will be in English and the second part will be in Urdu or Hindi. और अगर आप ये वीडियो उर्दू और हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दरमियान से स्विच कर सकते हैं. Now let's talk about the peculiar behavior of boron. As I told you earlier in the previous chapter, when we talk about the peculiar behavior of lithium or the peculiar behavior of boron, the representative elements of every group show dissimilarities and differences in the properties as compared to the other members of the group. As we know, the boron is the representative element of group IIIA, so it also shows some dissimilarities and differences in the properties as compared to the other group members, which are aluminium, gallium, thallium, and indium. The dissimilarities and the differences are based on two basic reasons. The first reason is the size of the boron, which is very smaller as compared to the size of the other group IIIA members. And the second reason is the high ionization energy of the boron as compared to the other group members. Now let's justify the small size and high ionization energy of the boron. As I've told you earlier in the first chapter, when we talk about the atomic size and ionic size, when we move top to bottom in a group, the atomic size and ionic size increases. As we know, the boron is the representative element of the group IIIA, so we can say that when we move from top to bottom, the ionic size and atomic size in the group IIIA increases, and it's obvious that boron is smaller in size as compared to the other group IIIA members. Now, if we look at the trend of the ionization energy, as I told you earlier in the first chapter when we talk about the ionization energy, I have told you that when we move from top to bottom in a group, the ionization energy decreases. So we can conclude that as the boron is the representative element of group IIIA, so it has the higher ionization energy as compared to the other group members. Due to the high ionization energy and small size, the boron is nonmetallic in nature, and we can also say that the boron cannot lose its electron very easily and more stable due to its small in size and high ionization energy. So that's the first point and the first dissimilarity of the boron from the group IIIA members. Now if we talk about the second dissimilarity, that the boron is the only element with less than 4 electrons in its valence shell, which is not a nonmetal. Now we can justify this point as if we look at the electronic configuration of boron, we will come to know that the boron has total 5 electrons and 2 of them are present in K shell and 3 of them are present in L shell, which is also a valence shell. So we can say that the boron has 3 electrons in its valence shell. So we can say that boron is the only element of the periodic table having less than 4 electrons in the outermost shell and behaves as nonmetals. Other nonmetals of periodic table having greater than 4 electrons, or in the case of carbon having 4 electrons in the outermost shell. Now let's talk about the third similarity. Boron always uses all the 3 of its valence electrons in bonding purposes, and its common oxidation state is +3 and -3. Now let's justify this. As we know, the boron has 3 electrons in the valence shell, and when we talk about the trend of oxidation state, we will come to know that the group 1A, 2A, 3A, and 4A elements having the same oxidation state as their group number. So boron is present in the group 3, so we can say that the boron generally shows the +3 oxidation state when it loses all of its 3 electrons. And when it gains 3 electrons, it also shows -3 oxidation states.
Now let's talk about the fourth point, and in the fourth point, the dissimilarity is the boron generally forms molecular addition compounds, but the other group IIIA elements does not form molecular addition compounds. Next, the fifth point, the boron do not form ionic compounds as the other nonmetals because boron is nonmetallic in nature, and when it reacts with sulphates, nitrates, and other anions, it does not form the stable cations, so we can say that the boron does not really form the ionic compounds, but other group members generally form ionic compounds. So these are the general dissimilarities of the boron and the other group 3A members. जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस चैप्टर में पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम और पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम वाली वीडियो में बताया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, वो डिससिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस शो करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में अब एज़ कम्पेयर टू देयर ग्रुप मेंबर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि बोरॉन ग्रुप 3A का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, तो ये भी बाकी तमाम ग्रुप मेंबर से जिनमें एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम और थैलियम आ जाते हैं, उनसे कुछ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करता है और इसको हम कहते हैं पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। अब जो डिसिमिलरिटीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो जनरली दो रीजंस पे डिपेंड करती हैं। एक तो बोरॉन का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स, और बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स। इन दोनों चीज़ों को हम इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़, आयनिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसा कि ग्रुप 3A में बोरॉन टॉप पे पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम बोरॉन से गैलियम, इंडियम और थैलियम की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसी बिना पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि बोरॉन का एटॉमिक साइज़ जो है वो अपने ग्रुप मेंबर में से सबसे छोटा है। बिल्कुल इसी तरह हम आयनाइजेशन एनर्जी के जब ट्रेंड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो इसी बिना पर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि बोरॉन जो है वो ग्रुप 3A का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बाकी तमाम ग्रुप मेंबर में से सबसे ज़्यादा होगी। और अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कि एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के रिलेटेड थी, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें ये दोनों ट्रेंड्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हुए हैं। बोरॉन के स्मॉल इन साइज़ और हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं कर सकते वो नॉन मेटेलिक होते हैं। तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि बोरॉन भी नॉन मेटेलिक इन नेचर है, हालांकि ग्रुप 3A के बाकी मेंबर्स जो हैं वो मेटेलिक इन नेचर हैं। इसके अलावा हम जब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो बोरॉन जो है, जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे हम नज़र डालते हैं तो बोरॉन वाहिद periodic टेबल का एलिमेंट है जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है और वो एक नॉन मेटल है। हालांकि बाकी जितने भी periodic टेबल के एलिमेंट जो कि नॉन मेटेलिक इन नेचर होते हैं उनमें या तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में, लेकिन बोरॉन के वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है। इस बात को हम बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन, जिसमें बोरॉन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनर शेल जिसे हम के शेल कहते हैं उसमें पाए जाते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एल शेल या जो बोरॉन का वैलेंस शेल होता है उसमें पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बोरॉन periodic टेबल का वाहिद एलिमेंट है जो नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है और उसके पास 4 से कम, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब थर्ड पॉइंट जो है वो भी सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट में वो ये कहते हैं कि बोरॉन अपने ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और +3 या -3 ऑक्सीडेशन जो है वो शो करता है।
इस बात को भी हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पहले 4 ग्रुप्स हैं उनके मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के बराबर होती है। जैसे कि हमें पता है कि बोरॉन ग्रुप 3 में पाया जाता है, तो बोरॉन जो है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होगी और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन उसी सूरत में शो करेगा जब ये अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लेकिन बोरॉन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि बोरॉन जो है वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है, जबकि ग्रुप 3A के बाकी मेंबर्स जिनमें एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आ जाते हैं, ये एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स नहीं बनाते। उसके अलावा हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि बोरॉन जो है वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता जब ये सल्फेट, नाइट्रेट्स और दीगर एनाइंस के साथ मिलता है। ये आयनिक कंपाउंड्स इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ये स्टेबल कैटायन नहीं बना सकता। ये था जी आज का आपका पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन के बारे में। अगर आप इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।